Yeah, well, hopefully Sarfaraz will be thinking the same, and he'll be eyeing a big innings, because if he scores big, the team gets to do well, and if the team does well, well, you never know what happens on day five, at the end of day five. But Taus, your thoughts on the wicket now? Day one washout, day two India का जो session था, that we have no idea what happened. The conditions were very favorable to the bowlers, but जब New Zealand batting करने आई, the conditions were perfect for batting. Indian team also today they looked really good with the bat in hand. Ball ठीक है, कुछ odd balls नीचे रह रही थी, bounce हो रही थी. There is some turn in the pitch, but going forward, day four, day five, how do you see the pitch panning out for the next 2 days? First session tomorrow, towards the end tomorrow, क्या लगता है आपको, पिच और स्पिन होती जाएगी और टूटेगी? योर थॉट्स ऑन दैट? नहीं, जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को एडवांटेज मिला था वो था ओवरकास्ट कंडीशंस का. दैट्स व्हाई द पीसर्स मैनेज टू गेट दोज wickets, managed to get them all out for 46. Or also the wicket was fresh, that had moisture, and it was quite hard and dry wicket also, ki jiski wajah se there was some bounce initially in the initial stage where the wicket keeper was just jumping around to catch those balls in his gloves. बट या जैसे जैसे विकेट ओल्ड होती जा रही है, डिटेरियोरेट होती जा रही है, विच इज हाउ इट हैपेंस इन इंडिया. ब्रेक हो गई है विकेट, और ब्रेक होगी, और वो कंडीशन थोड़ा डिफिकल्ट होगी स्पिनर्स. दैट्स व्हाई क्या हम गलत थे ये इसको लेकर कि यार कुलदीप को खिला लिया या आकाशदीप को नहीं खिलाया? अभी भी मैं मानता हूँ आकाशदीप को खिलाना चाहिए था, शायद मोहम्मद सिराज को बिठा देते कि एटलीस्ट एक स्पिनर अगर एक्स्ट्रा खिलाना था तो. मगर आपका काम अश्विन और जडेजा से ही हो जाता, मगर कुलदीप भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो आई थिंक इंडिया हैज गॉट द वैरायटी. एंड अगर if they come out with a good target, like again I'll say 150 175 is enough on a wicket. That is like after tea session and fifth day, it's going to get worse difficult, and will start playing on the minds of the New Zealand, the Kiwi batters. क्योंकि यार at the end of the day India are masters at home, right? 46 was just one of thing. 46 all out was just one of thing that doesn't happen every day. Or and we have seen over the last few games how India has pulled off amazing victories against England first without having their main players like Virat and the KLs and the Shreyas Ayers with youngsters. And then you saw what happened in the last test match against Bangladesh, which just finished in 2 days. So New Zealand will have some fear. They will worry कि यार you can't take India lightly, even if they get a 150 or 130 kind of a target to chase. क्योंकि fourth fifth day you know what happens on Indian wickets, and we have top class spinners यार. अगर अश्विन को मिल गया वैसा विकेट जहां पर विकेट ब्रेक हो रहा है, जहां पर पैचेस है, या कुलदीप को मिल गया, and you know Jadeja can do wonders with his arm balls and the sharp turners. So it's going to be one difficult task. The Yeah, onus lies on the batters right now यार. आपने पहले गंवा दिया 46 ऑल आउट करके, अपने अब आपको कंपेंसेट करना चाहिए था. और अब बारी आपको कंपेंसेट करनी, क्योंकि आपके बॉलर्स ने हर मैच जिताया है थ्रू आउट, चाहे वो इंग्लैंड सीरीज हो या बांग्लादेश. ऑब्वियसली टेस्ट मैचेस में बॉलर्स ही जिताते हैं, बट बल्लेबाजों का भी रोल रहता है, और बल्लेबाज ने मोस्टली कुछ खास ग्रेट काम नहीं किया है. रोहित फॉर्म में नहीं रहे लकीली, मैच में 50 बार दिया, या विराट कम बैक किए हैं, राहुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं खेले हैं, ऋषभ पंत ने कम बैक तो की थी, पिछले मैच में वापसी की थी. तो onus lies on the batters tomorrow. Take up the responsibility, get some good runs, start from scratch again without thinking that. In fact, I would say Sarfaraz Khan should not think that he's on 70 and he's got just 30 runs to score to get his personal milestone of first ever 100 in international career or maybe Test cricket. I think he should think about the team, fight it out, get those runs, get start from zero, look yeah, for another double hundred. He's got that confidence of scoring a double hundred, right? From yeah. Irani Trophy. So if getting a double hundred or a 175 here Hmm. will be a major boost for him going into Australia series. Now that he is fixed, now that he's got the runs in this crucial test match, I think his Hmm. value in the team has gone higher and higher. And this is the best time to get in the good books of all the critics right now. Skeptics who are thinking that he knows only how to play those kind of street kind of cricket. You know,
Sarfaraz is kind of a cricketer. You won't see classical shots from him. You will see how we play those gully cricket shots, those cuts, those Yeah. tabs, jabs, those पैर के बीच में Khadus से kind of निकालना, cricketer. पैर से नहीं, खड़ूस भी होते हैं जो मुंबई क्रिकेटर्स होते हैं, क्लासिकल Yeah. बैट्समैन भी होते हैं, आप तेंदुलकर की बात करें, आप अमोल मुजुमदार की बात करें, खड़ूस, हाँ Yeah. खड़ूस यार आप विकेट आसानी से नहीं दे, दैट नहीं टर्म देंगे. कैन बी यूज्ड, ही इज नॉट गिविंग Yeah. अवे दैट विकेट एंड ही शुड कंटिन्यू डूइंग इट. मुंबई क्रिकेट Hmm. आना चाहिए, वो माइंडसेट आना चाहिए. मे बी ही इज नॉट दैट क्लासिकल बैट्समैन बट डेफिनेटली ही कैन पुट out those gully mindset and play Khadus cricket and give India that win, the desperate Yeah. win that India is looking. No, absolutely. Bansal, how do you see the next 2 days, or rather, let's talk about day four as of now. How do you see the day four panning out for the Indian team? Do you think they have in them to reach New Zealand's score, that is 125 runs, and then on top of that, hit or score more, 150, 170 more, a match-winning score? What's your thought on that? आई फील एज आई टोल्ड अर्लियर, मतलब क्योंकि हम इंडिया में ही खेल रहे हैं, बेंगलोर केएल राहुल का होम ग्राउंड है, ऋषभ पंत प्लेज वेल, सरफराज इज ऑलरेडी गोइंग वेल, तो मतलब आई फील कि आइडियली वी शुड बी एबल टू रीच व्हाट न्यूजीलैंड हैज ऑन द बोर्ड राइट नाउ, और उसके ऊपर भी हम एटलीस्ट 100-150 रन बना सकते हैं अगर थोड़ा अच्छे से एग्जीक्यूट करें खुद को, बिकॉज द बैटिंग लाइनअप इज टैलेंटेड. अश्विन जडेजा भी आएंगे, अगर वो भी लास्ट में 40-50 रन मारते हैं जैसे टीम साउदी ने किया आज, तो I think it's not too difficult a task to have a lead of 150-200 runs, but what I feel is अगर हमें जीतना है तो I think at least 200 runs चाहिए हमें. ताउस भाई 150-170 बोल रहे हैं, but I feel कि अगर 150-160 का टारगेट रहेगा तो वो थोड़ा थोड़ा बैलेंस्ड रहेगा कि न्यूजीलैंड कैन चेज इट आउट, बट अगर 200 के ऊपर चला गया अपना लीड तो आई फील कि एक मेंटल प्रेशर बनेगा उन पे 200 का नंबर देख के बैटर्स पे, और वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंट लगेगा रादर देन चेजिंग 150-160 रन, और बॉलर्स को भी ऑब्वियसली 50 रन का ज़्यादा कुशन मिलेगा. सो आई थिंक इवन इफ द टारगेट इज लाइक 205-210, तो दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड टारगेट, और कंसिडरिंग कि पिच भी जिस तरह क्रम्बल हो रही है, और फिफ्थ डे पे और भी बॉलिंग फ्रेंडली होगा, स्पिन फ्रेंडली होगा पिच, तो वो अगर वो चीज़ें होती है, आई इट सीम्स लाइक वी आर बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक राइट नाउ कि न्यूजीलैंड के स्कोर तक पहुंच जाएंगे, उसके ऊपर भी 200 रन का लीड ले लेंगे, एंड देन द स्पिनर्स विल हैव देयर मैजिक प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड. तो थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है अभी, बट इफ समथिंग लाइक दिस कैन हैपन it will be brilliant. Like, Yeah, I mean, that means giving a 200 run target means you have to score 320, 325 more from exactly. here, which is a big ask.